Hello everyone, welcome to our channel IVLegal. In continuation to our Indian Evidence Act lecture series, in our previous videos we have discussed till section 56 of Indian Evidence Act, where we talked about that when in what all cases a fact need not be proved. Those facts which are judicially noticeable need not be proved. So in our today's video we are going to talk about section 57 of Indian Evidence Act. Section 57 ये बताता है कि facts of which the court must take judicial notice. 56 में हमने बात करी थी कि कौन कौन से फैक्ट्स का कोर्ट जुडिशियल नोटिस ले सकता है, जुडिशियल नोटिस होता क्या है, ये हमने डिस्कस किया। और उन फैक्ट्स को जिन फैक्ट्स का कोर्ट जुडिशियल नोटिस ले लेता है उनको प्रूव करने की जरूरत नहीं होती है, ये भी हमने सेक्शन 56 में डिस्कस किया था। सो नाउ इन आवर सेक्शन 57 द सेक्शन स्टेट्स दैट फैक्ट्स ऑफ व्हिच द कोर्ट मस्ट टेक जुडिशियल नोटिस। मतलब यहाँ पर वर्ड मस्ट यूज हुआ है। मस्ट से यहाँ पर मतलब है कि कोर्ट शैल टेक द जुडिशियल नोटिस। कौन कौन से वो फैक्ट्स हैं जिनका कोर्ट शैल टेक द जुडिशियल नोटिस, कोर्ट इज बाउंड टू टेक द जुडिशियल नोटिस। तो अगर कोर्ट उन फैक्ट्स का जुडिशियल नोटिस ले लेगा तो एज पर सेक्शन 56 दोस फैक्ट्स नीड नॉट बी प्रूव्ड। तो अब यहाँ पर कौन कौन से फैक्ट्स हैं जिनका कोर्ट जुडिशियल नोटिस लेगा ही लेगा। इट इज मैंडेटरी फॉर द कोर्ट टू टेक जुडिशियल नोटिस ऑफ दोस फैक्ट्स। सो बेसिकली दोस फैक्ट्स आर एज फॉलोज। फर्स्ट इज द लॉज विच आर इन फोर्स, द लॉज विच आर फोर्स इन इंडिया। ठीक है, जो लॉ अभी इंडिया में इन फोर्स है उनका जुडिशियल नोटिस कोर्ट को लेना होगा। सेकंड इज द एक्ट पास्ड बाय पार्लियामेंट एंड यूके, पार्लियामेंट ऑफ यूके। थर्ड इज पार्लियामेंट प्रोसीडिंग ऑफ यूके एंड इंडिया। फोर्थ इज आर्टिकल्स ऑफ वॉर फॉर द इंडियन आर्मी, नेवी और एयर फोर्सेस। फिफ्थ इज सील ऑफ इंग्लिश और इंडियन कोर्ट, इंग्लिश कोर्ट या इंडियन कोर्ट की जो सील है उसका जुडिशियल नोटिस कोर्ट को लेना ही लेना होगा, दैट इज मैंडेटरी। उसके बाद आता है आपका सिक्स्थ, दैट इज नेम, टाइटल, सिग्नेचर ऑफ एनी ऑफिस। कोई भी स्पेसिफिक डेजिग्नेटेड ऑफिस है गवर्नमेंट का, देन इन दैट केस उसका नेम, सील, सिग्नेचर इज अ फैक्ट व्हिच द कोर्ट हैज टू टेक जुडिशियल नोटिस ऑफ। देन कम्स सेवंथ, दैट इज टाइटल एंड नेशनल फ्लैग ऑफ एवरी स्टेट। ठीक है, तो नेशनल फ्लैग ऑफ एवरी स्टेट दैट इज अगेन अ फैक्ट ऑफ व्हिच द कोर्ट हैज टू टेक जुडिशियल नोटिस। देन कम्स एट, दैट इज जियोग्राफिकल डिविजन्स, पब्लिक फेस्टिवल्स एंड होल्डिंग्स इन and holidays in official gazette. एज पर ऑफिशियल गैजेट जो हॉलीडेज हैं, पब्लिक फेस्टिवल्स हैं और जियोग्राफिकल डिविजन्स, मतलब एक जैसे इंडिया अपनी कंट्री है तो इस भारत देश को जियोग्राफिकली डिवाइड किया गया है, तो उस जियोग्राफिकल डिवीजन का और आपकी हॉलीडेज का एज पर ऑफिशियल गैजेट और पब्लिक फेस्टिवल्स का कोर्ट हैज टू टेक जुडिशियल नोटिस। The last is, that is ninth point, that is territories under the dominion of government of India. All the territories under the government of under the dominion, under the control of government of India, the court has to take judicial notice of this fact. So यहाँ पर बस डिफरेंस ये है कि ये सेक्शन बहुत मैंडेटरी है। This section is imposing a mandate on courts to take the judicial notice of these following facts, which I have discussed right now. So now, apart from this, is the list merely exhaustive? The list is inclusive, and this list also includes other following things, that is, in all these cases and all those matters of public history, literature, science or art, the court may report its judicial notice by way of taking an aid from any book, document or paper. तो अगर इसके अलावा, इन फैक्ट्स के अलावा जो भी अपन ने डिस्कस किए, if the court has to form in all other matters of public, science, literature, art, court can take the judicial notice by way of taking an aid from appropriate book or documents or paper. किसी appropriate book, document और paper के through court judicial notice ले सकता है on any matter of public, literature, science, art. ठीक है, तो ये स्कोप को एक्सपांड कर देता है ये क्लॉज अंडर दिस सेक्शन 57। उसके बाद आता है कि सेक्शन 57 में लास्ट में ये बताया गया है कि सपोज कोर्ट को अगर बुलाया जाता है so as to take a judicial notice of any fact, then in that case court may refuse to take the judicial notice of that fact. ठीक है, मतलब कोई पार्टी अगर कोर्ट के सामने रिक्वेस्ट कर रही है कि टू टेक द जुडिशियल नोटिस ऑफ एनी फैक्ट, सो दैट इफ द कोर्ट टेक्स द जुडिशियल नोटिस देन पार्टी को उसको प्रूव नहीं करना पड़ेगा उस फैक्ट को। तो यहाँ पर अगर पार्टी रिक्वेस्ट करती है कोर्ट से टू टेक द जुडिशियल नोटिस ऑफ एनी फैक्ट, देन इन दैट केस द कोर्ट में रिफ्यूज टू टेक द जुडिशियल नोटिस until and unless the party presents any book, document or paper to the before the court which the court considers necessary to enable him to take the judicial notice. मतलब ये है कि अगर कोई पार्टी रिक्वेस्ट कर रही है कोर्ट से टू टेक द जुडिशियल नोटिस ऑफ एनी फैक्ट, तो कोर्ट वहां पर रिफ्यूज कर सकता है until and unless जो पार्टी रिक्वेस्ट कर रही थी वो किसी बुक, पेपर या डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करेगी बिफोर द कोर्ट which would mandate the court to take the judicial notice.
आप समझे, वो बुक पेपर और डॉक्यूमेंट अगर कोर्ट को मैंडेट करता है टू टेक द जुडिशियल नोटिस, देन ओनली ही विल टेक, और एल्स द कोर्ट मे रिफ्यूज टू टेक द जुडिशियल नोटिस ऑफ द फैक्ट्स which the party is requesting to consider as to take the judicial notice, so that the parties does not require to prove. तो यहाँ पर they have to, until unless they present such books, papers and documents which mandate the court to take judicial notice, court may refuse to take the judicial notice of those facts. Apart from the following which we have discussed earlier, जो हमने 9 points of fact discuss किए, and any other matter of public literature or science, इनके अलावा अगर कोई matter है जो पार्टी रिक्वेस्ट कर रही है टू टेक द जुडिशियल नोटिस ऑफ एनी फैक्ट, तो वहां पर उनको कोई बुक पेपर डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करना पड़ेगा बिफोर द कोर्ट, दैट which would mandate the court to take the judicial notice, or else the court may refuse for the same. So this was all about section 57, जहां पर हमने बात करी कि court shall consider what all facts shall be taken, shall be judicially noticeable by the court. वो वर्ड shall और must का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है. So that was all about section 57. Now in a coming video we will talk about section 58, and till the time, bye bye, take care.